वेलकम स्टूडेंट्स। इस क्वेश्चन में दिया है एफ ऑफ एक्स इज मैक्सिमम ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स माइनस वन होल स्क्वायर एंड 2x into 1 minus x. So f of x is the maximum of these functions and f of x is defined between 0 and 1, and you're asked to find at how many points this function is not differentiable. एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है, डिफरेंशिएबल एवरीवेयर है, 2 points और 3 points. So let us try to analyze this function. So ऐसा functions को हम ग्राफ से बहुत easily analyze कर सकते हैं. So my f of x is maximum of x square x minus 1 whole square and this. So ये तीनों का ग्राफ्स ड्रॉ करता हूं. So ये तीनों में जो ग्राफ सबसे ऊपर है that will be the effective graph because f of x is maximum of these three. So if you try to draw the graph of these functions, ये 0 है, मान लीजिए 1 है, ठीक है. So y is equal to x square का ग्राफ कैसे होगा? So let this be equal to 1. Okay, you know that y is equal to x square का ग्राफ जो है it will look something like this. This is my 1 comma 1. So it goes in a parabolic trajectory. So this is the graph of y is equal to x square. ठीक है. y is equal to x minus 1 whole square. So how does this graph look like? So इस ग्राफ आप देख सकते हैं. So if you take y is equal to x minus 1 whole square, this is also a quadratic function. इसका भी ग्राफ पैराबोला आना चाहिए. बट आप देख सकते हैं इसका when you draw the table correspond to this function, x equal to 0 पुट किया तो y कितना आ रहा है? x equal to 0 के लिए y 1 आ रहा है. x equal to 1 के लिए y 0 आ रहे हैं. That means the graph is passing through this point 0 comma 1 and 1 comma 0. And again, this is a upward parabola. This is not a downward parabola. So the graph looks something like this. ठीक है. यहां से यहां तक पैराबोलिक कर्व में नीचे आ रहे हैं. ठीक है. Now, where does these two curves intersect? ये दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए तो जस्ट नीड टू डू x स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 1 होल स्क्वायर. सो x इज इक्वल टू x माइनस 1 और 1 माइनस x. सो x इक्वल टू x माइनस 1 पुट किया तो आपको कुछ सोल्यूशन नहीं आएगा. x इज इक्वल टू 1 माइनस x पुट किया था x इज इक्वल टू हाफ. सो बोथ ऑफ दीज कर्व्स इंटरसेक्टेड x इज इक्वल टू हाफ. ठीक है. अब लेट मी ड्रॉ द थर्ड कर्व. थर्ड कर्व इज y is equal to 2x into 1 minus x. So this is also a quadratic function. But आप देखा तो 2x minus 2x square, the leading coefficient is negative. So this is a reverse parabola. It's an inverted parabola. And what are the roots of this? X equal to 0 and x equal to 1. X equal to 0 पे 0 हो रहे, x equal to 1 पे 0 हो रहे. So this curve passes through these 2 points. And इसका maximum कब आएगा? इसका डिफरेंशिएट कर लीजिए. y डैश इज इक्वल टू 2 माइनस 4x इज इक्वल टू 0 पुट किया था x इक्वल टू हाफ में. दिस कर्व हैज मैक्सिमम. एंड व्हाट इज द मैक्सिमम? x इक्वल टू हाफ पुट किया तो y एट हाफ इज इक्वल टू 2 इंटू हाफ इंटू 1 माइनस हाफ, दैट इज इक्वल टू हाफ. सो ये फंक्शन विल बी समथिंग लाइक दिस. इफ दिस इज माई हाफ, the graph of this function will be something like this. The graph of this function is something like this. X equal to half में my value of y will be half. ठीक है. Now, what is my effective function f of x? My effective function f of x is the maximum of these three functions. So आप देख सकते हैं यहां से यहां तक in this interval my orange curve works, and from here to here, यहां से यहां तक ये वाला कर्व काम करे, and from here to here this curve works. So the graph of my effective function will be this curve, and this curve. So the graph will be like this and this and this. So आप देख सकते हैं at how many points is this function not differentiable. So कितना शार्प एडजेस आ रहे, यहां एक शार्प एडज आया, यहां एक शार्प एडज आया. So you have two sharp edges.
That means the function is not differentiable at 2 points. At all other points, the function is differentiable. Thank you.